our question. High scope. In this question, you play a game of n rooms and m tunnels. Okay, your initial score is 0 and each tunnel increases your score by x, where x may be positive or negative. Great. You may go through a tunnel several times. Your task is to walk from 1 to n. So we have to calculate distance from 1 to n. Okay, and we have to calculate maximum score. Great. Some more lines are here. All tunnels are one way tunnels. Okay, तो जब हम एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं तो उसमें खाली वन वे रखेंगे. ठीक है, अगर आप ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो इसका. ठीक है, एंड दिस इज इट. And from constraints you can see that we have to use Bellman fold, and from this thing also you can simply observe that we have to use Bellman Ford's algorithm, since weight of edges are negative also. So okay, this is main observation. Now what the thing is, using Bellman Ford we calculate shortest path. Okay, but we have to calculate here maximum path. For that we will simply negate the weight of edges. If we have weight edge -1, we will make it +1. If we have weight 7, we will make it -7. Okay, by doing this we are simply changing our question to minimum score. Okay, like suppose we have some edges 1 2 3 4. ठीक है, ये उसके वेट्स है, और अगर उसको हमने -1 -2 -3 -4 कर दिया, देन सिंपली हुआ क्या कि जो हम मैक्सिमम स्कोर कैलकुलेट कर रहे थे, और लेट सपोज कि मैक्सिमम पाथ की जो डिस्टेंस आनी थी आंसर में, वो कितनी आएगी 1 + 2 + 3 + 4. ओके, कितनी हो जाएगी 4 3 7 3 10. बट इफ वी निगेट ऑल द एजेस देन मिनिमम पाथ विल बी -10. ओके, तो ये था मैक्सिमम स्कोर कैलकुलेट करने के लिए. वी विल सिंपली निगेट ऑल द वेट्स गिवन हियर, एंड what we have to print here is maximum score you can get. However, if you get an arbitrarily large score, print -1. arbitrarily large score का मतलब क्या है, यहाँ पे आओ. ये जो हमारी साइकिल बन रही थी ग्राफ में, ठीक है, ये साइकिल बन रही थी, नेगेटिव वेट साइकिल बन रही थी, और इससे हो क्या रहा था, जो हमारा पाथ का जो हमारा डिस्टेंस ऑफ पाथ है वो क्या हो रहा था, नेगेटिव की तरफ इंक्रीज होता जा रहा था. ठीक है, ओके. तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि -1 हमें किस केस में प्रिंट करना है, जब यहाँ पर कोई एक साइकिल है. ठीक है, नाउ नॉट नेगेटिव वेट साइकिल, सिंपली वी विल चेक फॉर पॉजिटिव वेट साइकिल. व्हाई? बिकॉज वी हैव रिवर्स्ड ऑल द वेट्स और वी हैव नेगेटेड ऑल द वेट्स. तो जो भी नेगेटिव वेट की एजेस थी वो अब पॉजिटिव हैं. ठीक है, सिंपली यू कैन चेक हेयर इज, ये जो -8 था अब ये क्या है +8 है, और ये -3 है, और ये -4 है. ठीक है, तो अब क्या होगा, अब साइकिल के चलने से चलेंगी ये अभी भी उतना ही. ठीक है, बस ये जो वेट पाथ का डिस्टेंस है ये इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, दिस इज अ मेन ऑब्जर्वेशन, एंड सिंपली you have to check if there is a cycle or not, and if there is a positive weight cycle you simply have to print -1, else you have to print distance of n. Okay, obviously because we have to calculate distance from 1 to n. So let me show you the code. We have simply inputted all the nm, and then these are adjacency vectors. I will tell you later a और b का क्या काम है. ठीक है, now vector of tuple em, why I have taken this is, what we do in Bellman Ford's algorithm is we iterate over all the edges, you can say. ठीक है, ये मैं तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन पे ले आया हूँ. we iterate over all the edges where we have two nodes जिनके बीच की एज है a and b and its cost. ठीक है,
और नीचे हम क्या करते हैं, उन सारी एजेस पे रिलैक्सेशन परफॉर्म करते हैं। तो सेम थिंग के लिए मैं जो ई में क्या स्टोर करवा रहा हूँ, वेक्टर ऑफ वेक्टर है जो ई, वेक्टर ऑफ टपल है जो, उसमें यू वी एंड माइनस डब्ल्यू, ओके, डब्ल्यू इनपुट एंड माइनस डब्ल्यू फॉर निगेटिंग द वेट, सिंस वी आर कैलकुलेटिंग minimum path instead of maximum. Okay, fine. Now taken two vectors, visited one and visited. I will tell you later why I have taken this. Now I have performed DFS. What is the need of this DFS? Let me show you again. I have told you कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव वेट साइकिल है तो हमें चेक करना, एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी, दैट ईदर इट इज कनेक्टेड टू सोर्स और डेस्टिनेशन और नॉट। सॉरी। So by performing DFS over A visited and 1 and from N, okay, so we will perform DFS from source and from destination, and we will simply change visited and visited 1, okay, जहाँ जहाँ पर हमारा DFS का फंक्शन दिखाता हूँ। ओके, हमने नॉर्मल डीएफएस परफॉर्म किया है और जो हमारा बीच का वेक्टर है, ठीक है, जिसपे हम विजिटेड ले रहे हैं, हम उसको बस चेंज कर रहे हैं कि किसी सोर्स वर्टेक्स से हम कौन कौन सी नोड्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम खाली इससे ये पता लगाएंगे, एंड इफ फ्रॉम सोर्स वी हैव विजिटेड टू सम नोड, वी विल सिंपली अपडेट विजिटेड ऑफ दैट नोड टू 1, ओके, एंड इफ फ्रॉम डेस्टिनेशन we are visiting to any node, we will simply update visited 1 to 1, okay. Now a and b का यूज अब तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इन a we are simply storing u to v edge, and in b we are simply storing v to u, v to u why, because जो हम डीएफएस लगाएंगे वो नोड डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ इटरेट करेंगे ना, तो उसमें एज आपकी रिवर्स हो जाएगी ना, वी टू यू, दैट्स व्हाई, ओके, ग्रेट। नाउ दिस इज आवर डिस्टेंस एरे इन विच ऑल आर इनिशियलाइज्ड टू इनफाइनाइट, एंड देन सिंपली वेक्टर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सोर्स विल बी 0 इनिशियली एंड bool flag 0 for indication of cycle, positive weight cycle, okay. Now this is our Bellman Ford loop. We have iterated n times, n minus 1 टाइम्स में हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस एरे, जो हमारी होपफुली आंसर होगी, एंड लास्ट इटरेशन, इन nth इटरेशन वी आर सिंपली चेकिंग दैट इफ देयर इज एनी पॉजिटिव वेट साइकिल और नॉट, ओके। तो सिंपली 1 to n टाइम्स लूप, देन x in our auto x in vector e, this is for iteration in all edges, एंड ये जो टाई फंक्शन है ना, इससे क्या होता है, जो तुम्हारा टपल होता है, मान लो, ठीक है, व्हाट इज अ टपल, लेट मी एक्सप्लेन दिस। टपल क्या होता है, टपल इज सिंपली लाइक पेयर, इन पेयर यू कैन स्टोर ओनली 2 वैल्यूज, ओके, इन टपल यू कैन स्टोर मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, लाइक ये स्ट्रिंग है तो ये इंटीजर भी हो सकता है और ये भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, एंड ये मान लो टपल था। नाउ हाउ विल यू इटरेट ओवर दीज वैल्यूज, you use trie function, okay. Let's say these are 3 values in my tuple, 1 2 and 3, and you have to get all 3 values. You will simply use tie u v w is equals to tuple t. Let's say this is tuple t, this. Now first value will be stored in u, second will be in v, and third will be in w, ओके। तो टाई यू वी डब्ल्यू, यू में हमारी सोर्स नोड, देन दिस चाइल्ड, यू में पेरेंट, वी में चाइल्ड एंड डब्ल्यू में वेट। वी विल सिंपली चेक, एक्चुअली दिस इज फॉर nth लूप ओनली, ओके, दिस फ्लैग 1 इज फॉर nth लूप ओनली, ओके। बाकी तो ये हमारा रिलैक्सेशन हो रहा है। इन दिस यू कैन सिंपली चेक if visited of u is 2 and visited of 1 is
true, and relaxation, we can perform relaxation, then we will simply update, and जो हमारा nth लूप है उसमें हम फ्लैग 0 रखेंगे, एंड इफ इन nth लूप हमारा रिलैक्सेशन होता है तो फ्लैग हमारा 1 हो जाएगा. ठीक है, ग्रेट. नाउ एट लास्ट वी विल सिंपली चेक दैट इफ relaxation is there in nth loop, we will simply print output, because in that case we will get arbitrarily large score. Otherwise what we will simply do is we will print minus dn, minus distance of n, because in dn we got minimum shortest path, and to make it maximum, since we have negated all the edges weight, we will simply print again minus dn. Okay, so this code is accepted, you can check, and I will post the code link in description also. And if you have not subscribed, you can subscribe this channel, and if you like this video, press the thumbs up button. Thank you guys for watching.